This is presentation on logic gates, and on the screen you find symbols, and these symbols actually represent logic gates. Okay. In this lecture is an introduction to the logic gates, and we will learn their symbols, how to draw them on copy. We will see what are switching circuits, which are equivalent of these gates, and we will see the transistorized circuits of these logic gates. You already must have learned transistor as a switch in electronic circuit design. पढ़े होंगे transistor as a switch. Yes, sir. So using transistor circuits as transistors as switches, we will make logic gates. You are already familiar with the logic expressions, so you will learn how to implement a logic expression using logic gates. Okay, first the introduction. An electronic switching circuit that has only two possible outputs, that is called a logic gate. This is definition of a logic gate. A logic gate is an electronic switching circuit that has only two possible outputs. It will give you output which Yes, is sir. very close. It will give you one output which is very close to 0 volts, and that will represent logic low or false. It can give you another output which is close to 5 volts, and that will be called as logic high. Logic high mana true, that will represent true. Logic low will represent false. Implements a logic gate operation. Okay, now every gate is an electronic switching circuit, and it implements a logic operation, and it will implement logic operation of not. It will implement logic operation of OR. It will implement logic operation of AND or exclusive OR or exclusive NOR or NOR, NAND, all those. For every logic operation, we have a logic circuit, and that is called a logic gate. This is an example of inverter. Now this one is a switch, and this switch, if it is open, then what will be the output V naught? What is the voltage on this node? How can you determine voltage on this node? Anyone? Okay, I'm asking you very simple question. How to determine voltage on this node? Have you studied electrical circuits? Yes, sir. Okay, so how to determine voltage on a node like this? Sir, voltage divider rule. Okay, very nice. Voltage divider rule. Voltage divider rule apply करियो तो छा थींदो हिते voltage केतिरो थींदो? Copy है? Copy पेन है? Yes, sir. Try a voltage divider rule. So what's the value of resistor? Okay, that is the intelligent question. So if this switch is open, then what is the resistance between this node and this ground? Anyone? When this switch Infinite. is open, infinite. Okay, who is this? Sir, infinite. Sir, R2 Who infinite. हाँ वो पेरी Sir, infinite yeah. कहीं चाहिए? Sir, Divya. Okay, Divya, you are very, very intelligent. Thank you. It is infinite. So now you put this value into the voltage divider formula. Sir, R1 RG equal खणंदा से R2 infinite. R1 त थी वियो ही R ऐं So R2 थी वियो infinite. R2 infinite means maximum. R2 infinite थी वियो ऐं R1 ही थी वियो. So the voltage means even the maximum. Maximum केतिरो आहे ॿुधायो न? So 5 volt.
5 volts. So answer is 5 volts. 5 volts. पहिरीं तव्हां छा पिया चयो? So open आयो त inside ईंदो ई कोन वोल्टेज पहिरीं तव्हां 0 पिया चयो. है तो flow पहिरीं तव्हां 0 पिया चयो. हाणे तव्हां 5 Yes, पिया sir. चयो. पहिरीं सही पिया चयो ऐं हाणे सही पिया चयो. So V naught के वोल्टेज ईंदो थींदो. Okay, see, V naught is connected to 5 volts. See, and V naught has no connection with the ground. So output is 5 volts. Chakant, this is infinite. Yes, sir. Okay, now if you close the switch, then what will happen? So then current will flow through the resistance. 0. Then what will be the output? 0. Output will be 0 because there is no obstruction between this node and the ground. So this gets connected directly with the ground. So V naught becomes 0. Yes, And value of R2 is 0 because switch closes, resistance becomes 0. ठीक. हाणे ही हिकिड़ो switching circuit है जंहिंखे ॿ possible output आहिनि 0 volts and 5 volts. So it will either give you 0 or it will give you 5 volts. 5 volts can represent true, 0 volts can represent false, or vice versa. Logic high can represent true or logic low can represent true. It is your choice. So yeah. Now, one is called positive logic, other is called negative logic. Okay, so okay. Positive logic and negative logic. Positive logic छा हूंदी आहे ऐं negative logic छा हूंदी आहे? Positive logic low represents false. Logic high represents true. Yeah, so you can represent this or negative logic छा थींदी? ठीक, त हाणे ही छा थी वियो? ही थी वियो negative logic ऐं ही छा थी वियो? Positive logic. Normally what we will do? We will use positive logic normally unless stated otherwise. Normally we will be talking positive logic. Take all the time. So yeah, coming back to this circuit. Okay, this is symbol of NOT gate. This is symbol of NOT gate. In NOT gate your kam kehdo hundo hai? To implement logic not operation. To implement logic not operation. What is a NOT gate? A circuit which implements logic not operation. सही है ना? अच्छा, हाणे हिन में थींदो छा न? You will apply low voltage here. This switch will remain open and output will be high. And if you apply high voltage, this switch will close and output will become low. So for high input, output will be low, and for low input, output will be high. So this circuit will work as an inverter. So if X is false, if X is logic 0, if X is logic low, there is low voltage here. At the input, output will be X complement will be high. Input is X, output is X complement. And if X is high, then so if you apply 5 volts, switch will close. Then what will happen? Output will be low. Clear? You consider this as R1, this as R2, and you apply voltage divider rule. Here input is low, switch is open. Here
Input is high, switch is closed. And what is the difference between this circuit and this circuit? So show that circuit again. The transistor. Switch is replaced by Transistor. a transistor. Okay, Transistor. transistor na sahi hai. Okay, now this is a transistor. 5 volt ॿुधायो है न ओयो हिते पाण बैटरी सिंबल लगाए छॾियो आहे ठीक 5 volts. So 5 volts are coming here. This is a transistor and output पाण कंहिंते पिया ॾिसूं. This is the output node. Output पाण कंहिंते पिया an LED. We have connected an LED that will glow to represent logic high. To show you logic high. हिते output वॾो थींदो न 5 volt थींदो त ही LED ॿरंदी. अच्छा हिते पंहिंजो input is coming through a resistor. This is a current limiting resistor to limit the base current. You know that if you connect a resistor on base and one resistor on collector and you directly ground the emitter, this becomes a switch. अच्छा हिते input ते low हुंदो logic 0 the output will be high. LED ॿरंदी. Input te 1 hundo, the LED will turn off. So LED will switch off when there is logic high at the input and vice versa. सही है. ही जेको आहे छा आहे कहिड़ो गेट आहे NAND गेट छा आहे NAND गेट. हिन जो कमु कहिड़ो हूंदो आहे to implement logic NAND operation. It has two inputs. NOT गेट खे हिकिड़ो इनपुट आहे हिकिड़ो आउटपुट आहे. NAND गेट खे ॿ इनपुट आहिनि ऐं हिकिड़ो आउटपुट आहे. A NAND B. This gate is AND. This is AND. Okay, this is AND gate. This is AND gate. This is AND gate. This is AND gate. This one is NAND gate because it has a bubble. Without bubble, it is AND gate. Without bubble, it is AND gate. But with bubble, it is NAND gate. Okay. तो बबल जो फर्क है. हाँ बबल जो फर्क है. बबल है बबल कह रहे बबल ओ ही बबल है. नॉट गेट वारो छा है बबल है. ओए नॉट नैंड वारो छा. सही है. हाणे एंड जे एंड ते बबल हणबो त नैंड थी वेंदो. जी सर. if you add this bubble on AND gate, this becomes NAND gate. This is AND gate. This is AND gate. If you put bubble of this NOT gate here, this becomes NAND. Gate. This is OR gate. If you put a bubble, this becomes NOR. This is OR. This is NOR. This is exclusive OR. And this is exclusive NOR. The difference is this bubble. Okay. And Yes, this bubble actually represents the NOT operation. Say and Yes. NOT. And NOT becomes NAND. Or NOT becomes NOR. No. Exclusive OR NOT becomes exclusive NOR. सही है? Have you understood the symbols? Yes, sir. Symbols understand गए छॾा. हाँ, the symbols में तव्हांखे फर्क कहिड़ो पियो नज़र अचे? What is the difference between symbol of and or? हिननि ॿिनि में कहिड़ो फर्क है? सर वो थोड़ा extended है. Shape. Right ना है थोड़ा curved है. Okay, the back of AND gate is flat. Back of Yes. OR gate is curved. Curved. And front of AND gate is round. And front Yeah. of OR gate is sharp. ही थोड़ी sharp corner है हिते. ही Yeah. थोड़ो sharp है. ऐं ही थोड़ो sharp है. सही है? But Yes, sir. he complete round है हीअं. D-shaped. Yeah. So this is the difference between the symbols. ठीक है? And this is a triangle.
Yes, sir. ठीक. And this bubble Not- shows not- not operation. Yes, sir. So this symbol is not gate. This is circuit with not circuit with a switch, and here a switch is replaced by a transistor. And similarly, this is NAND gate with two switches. One switch is operated by A, other switch is operated by B. B. So you can say here it is A, here it is B. These two are inputs. These two are inputs. Inputs. And this is output. Now, in what condition do you think output will be 5 volts? So when both the switches are open. No, not correct. That Anyone both else? are closed. No, When- no. When A When both is are closed, wrong. When both are open, wrong. when A is closed. When any one of them When is any closed. one of them is closed. A is When Yeah. any one of them is open, output will be high. See carefully. The circuit ke diso. Out. Ko hikdo switch open hundo, the what will be the resistance from this node to ground? Infinite. from which node? From output node. Output node. Oyo. Kehdo hai output Yes. node hi. Output node jo resistance hita ground taई ketro hundo? Infinite hundo. If any switch is open. Currently, both switches are shown open. This is open position. Yes, sir. This is closed position. Open position, closed position. Open position, closed position. सही है? हाणे ॿुधायो त हिन में Sir? जी Yes, sir. But according to truth table, when both are open, the A and D is 1, which means maximum. let's first understand the circuit. Okay, पहले circuit के समझूं. Okay, sir. If any of the switches is open, resistance here will be how much? The resistance ketro hundo? Infinite. Infinite. The voltage divider rule तव्हांखे output केतिरो ॾींदो? 5 volts. Maximum. Yeah, Maximum. 5 volts. 5 volts लिखियो 5 पिया volts. ॾिसो मथे लिखियो पिया 5 volts. ठीक है, Yes, लॉजिक sir. ठाहे. अच्छा, हाणे Yes, sir. if any one of them, at least one of them, if both are open, तॾहिं बि resistance infinite ही हूंदो न? Yes, sir. Yes, sir. See, the two switches are in series. If any one of them is open or both are open, resistance will be infinite and output will be high. See the same situation here. Switch Yes, is sir. open, switch is open, both switches are open, output is high. One of them is open, output is high. See, A is open, B is closed. Here A is closed, but B is open. Output in these three conditions is high. Output becomes low only when both switches are closed. If the input is low, switch will be open. If input is high, switch will be closed. If this is A, if this is B, what will be this? A and B. A NAND B. A NAND B. What is the difference between this circuit and this circuit? Sir, there are 2 transistors. Switches have been replaced by Transistors. transistors. Okay, now transistor 1 in place of switch 1, transistor 2 in place of switch 2, and he output node है ना, इन्हें ते पाण LED लगाए छॾी आहे. ठीक है, आउटपुट ते पाण LED कनेक्ट कई आहे. LED ग्लो कंदी माना 1, LED ग्लो न पई करे माना 0. 1 पे अप्लाई करियूं इनपुट ते त माना 5 volts पे अप्लाई करियूं. If you are applying 0 means 0 volts. If you are logic 1 means 5 volts. So if base voltage is high, then transistor will be closed, a closed switch. If base input is low, transistor will be open switch. सही है? So if both switches, any one of these two switches is open, output will be high. If any one of them is open, output will be high.
Output will be low when both switches are closed. सर जो टेबल में आहे रिजल्ट ट्रू आयो आहे ए एंड बी जिते आहे उहो समझाइजो. अच्छा मूं पे चयो त हाणे ही जेकॾहिं ही ट्रुथ टेबल सम्झ में अची वई आहे त तव्हां ईअं सम्झो त ही जेको 0 वोल्ट 0 लिखियल आहे ही लॉजिक 0 आहे ऐं सर्किट में लॉजिक 0 पाण 0 वोल्ट सां ज़ाहिर कंदा आहियूं. 0 वोल्ट इफ यू अप्लाई 0 वोल्ट त माना छा थी वेंदो दैट विल बी लॉजिक 0. त 5 वोल्ट अप्लाई कंदा त माना लॉजिक 1. सही है. लॉजिक लो माना 0 वोल्ट्स. 0 वोल्ट रिप्रेजेंट कंदा 0 फॉल्स के माना लॉजिक 0 के ऐं 5 वोल्ट के रिप्रेजेंट कंदा 1 के. ही ट्रांजिस्टर स्विच है. ही ट्रांजिस्टर छा है? स्विच है. इने के 5 वोल्ट अप्लाई कबो त ही क्लोज थी वेंदो. क्लोज स्विच थी वेंदो माना कीअं हीअं थी वेंदो हेड़ो स्विच पूरियल है. ठीक है. ऐं जेकॾहिं तव्हां 0 वोल्ट अप्लाई कंदा इन जे बेस ते हिते 0 वोल्ट अप्लाई कंदा त ही छा थी वेंदो ओपन स्विच. हीअं पटियल है. ठीक है. ही पटियल है ओपन है ही पूरियल है क्लोज्ड है. सही है. 5 वोल्ट अप्लाई कबो त ही क्लोज थी वेंदो. 0 वोल्ट अप्लाई कबो त ही ओपन थी वेंदो. ठीक है. हाणे हिन में ॿ स्विच आहिनि. हिननि ॿिन्ही स्विचेस जी जाइ ते पाण छा लॻाए छॾियो आहे ट्रांजिस्टर. हाणे ही ॿई स्विच क्लोज थींदा त आउटपुट 0 थींदो छाकाणि त स्विच क्लोज थी वेंदो त रेजिस्टेंस 0 थी वेंदो. रेजिस्टेंस 0 थी वेंदो. तव्हां वोल्टेज डिवाइडर लॻाईंदा त आउटपुट छा थी वेंदो 0 थी वेंदो. वोल्टेज डिवाइडर रूल तव्हां पढ़ी वठिजो. कीअं हूंदो आहे वोल्टेज डिवाइडर रूल? ऐं लिखां हिते तव्हां सभिनी खे यादि आहे न वोल्टेज डिवाइडर रूल? V0 छा जे बराबरि आहे? जेको तव्हां हिते 5 वोल्ट आहे पोइ वरी मल्टीप्लाई बाय R2. अच्छा सोब जी सर. हाणे ही वोल्टेज डिवाइडर रूल आहे जेको तव्हां इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ियो हूंदो. सही है. ओ ही वोल्टेज V0 है हिन नोड ते. सही है. ही वोल्टेज जेको V0 हिन नोड ते वोल्टेज कहिड़ो आहे V0. इहो छा जे बराबरि आहे 5 वोल्ट. छाकाणि त हिन बैटरी मां 5 वोल्ट हिते अचनि पिया. 5 वोल्ट हिते पिया अचनि. 5 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय R2 ही आहे. ठीक है. ॿ ट्रांजिस्टर सीरीज में इनखे पाण छा पिया चऊं R2 ऐं हिनखे छा पिया चऊं R1. त जेकॾहिं ॿई स्विच क्लोज थी वेंदा त R2 0 थी वेंदो. R2 0 थी वेंदो त आउटपुट वोल्टेज बि 0 थी वेंदो छाकाणि त न्यूमरेटर में 0 अची वियो. 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 0 त आउटपुट 0 वोल्ट थी वेंदो. जेकॾहिं ॿई स्विच ओपन हूंदा या को हिकिड़ो बि ओपन हूंदो त ही R2 छा थी वेंदो इनफाइनाइट. R2 will become very large as compared to R1. त ही छा थी वेंदो this will become negligible. त ही छा थी वेंदो हलियो R2 divided by R2. R2 divided by R2 will become 1. त ही तव्हांजो वोल्टेज छा थी वेंदो 5 वोल्ट. आउटपुट ते छा मिलंदो 5 वोल्ट. जॾहिं एनी वन ऑफ देम इज ओपन को हिकिड़ो बि हिननि मां ओपन हूंदो त आउटपुट 5 वोल्ट मिलंदो. त इहो कॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां हिते 0 वोल्ट अप्लाई करियो या हिते अप्लाई करियो 0 वोल्ट या ॿिन्ही ते 0 वोल्ट अप्लाई करियो. त ॿिन्ही ते 0 वोल्ट अप्लाई कंदा त ॿई स्विच ओपन हूंदा. हिकिड़े ते 0 वोल्ट अप्लाई कंदा त हिकिड़ो ओपन हूंदो. सही आहे. आउटपुट 0 करे मिलंदो जॾहिं ॿई इनपुट हाई हूंदा. ओयो जॾहिं ॿई इनपुट हाई थिया त LED बंदि थी वई. हाणे नॉर गेट. हाणे नॉर गेट में जो ही लॉजिक ही स्विचिंग सर्किट आहे कंहिंजो आहे नॉर जो. इन में ऐं हिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे बुनियादी? सर हुन में स्विच आहिनि हुन में पैरेलल में हिन में सीरीज में. ओके हिन में सीरीज में आहिनि ऐं हिन में पैरेलल में आहिनि. अच्छा हुन में आउटपुट लो कॾहिं थींदो जॾहिं ॿई स्विच क्लोज थींदा. हिन में आउटपुट लो कॾहिं थींदो जॾहिं ॿई स्विच क्लोज थींदा. ऐं हिन में छा आहे को हिकिड़ो बि स्विच क्लोज थींदो त आउटपुट लो थी वेंदो. ॾिसो
जेकॾहिं ही क्लोज थी वेंदो त छा थींदो? हिते रेजिस्टेंस 0 थी वेंदो ऐं ही क्लोज थी वेंदो त बि रेजिस्टेंस 0 थी वेंदो ऐं आउटपुट लो थी वेंदो हलियो। ऐं जेकॾहिं ही इनपुट ए आहे, ही इनपुट बी आहे त आउटपुट छा थींदो? ए नॉर बी। हिन में ऐं हिन में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे? हिन में स्विच आहिनि, हिन में स्विच जी जाइ ते ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स। हा, ऐं ही ॿ कलेक्टर, ॿिन्ही जा कलेक्टर ॾिसो गॾु जॉइन थियल आहिनि, ॿिन्ही जा कलेक्टर। दे आर इन पैरेलल, दीस टू आर इन पैरेलल। ॾिसो ही आउटपुट हितां बि अचे पियो, हितां बि अचे पियो। ॾिसो ही शॉर्ट थियल आहिनि ॿ। ओ हीअं, ही स्विच ऐं ही स्विच, ही ॿई पाण में मिलियल आहिनि आउटपुट नोड सां। ही आउटपुट नोड आहे, इन सां ही ट्रांजिस्टर बि मिलियो पियो आहे ऐं ही ट्रांजिस्टर बि मिलियो पियो आहे। ही ॿ पैरेलल में आहिनि। को हिकिड़ो बाहि थींदो हिननि मां त आउटपुट लो थी वेंदो। हाणे आउटपुट पाण खे हाई कॾहिं मिलंदो? मैंने वही लो हुजनि सर इनपुट। जॾहिं Sir, ॿई both are zero. Okay, when both Zero. are zero, when both inputs are zero, both transistor will be open. When both transistors are open, means both switches are open. When both switches are open, means here resistance is infinite and output will be A nor B. Means 1. And he vari cha hai? IC. IC cha short form hondo hai. Integrated circuit. IC 7404 में छा है अंदर? Sir, 6 not Six. gate. Okay, 6 not gates in one IC. सही है? Yes, sir. ऐं ही नंबर है IC जो, इन में 4 AND gates आहिनि ऐं 4 OR gates here. त you can buy these ICs and do lab work at your home. ऐं आउटपुट छा ते ॾिसंदासीं पाण? आउटपुट कीअं ॾिसंदासीं? सर वोल्टमीटर ते। न, LED हणी छॾींदासीं न, ॿियो छा? LED is enough. See, I shown you LED. आउटपुट ते LED लॻाए छॾींदासीं, माना आउटपुट हाई आहे। सही आहे। ऐं इनपुट ते छा लॻाईंदासीं? इनपुट ते तव्हांजी मर्ज़ी आहे, स्विच लॻायो या कुझु बि न लॻायो। तव्हां तार खणो, 5 वोल्ट में विझी छॾींदा त माना लॉजिक 1 ऐं ग्राउंड में विझंदा त माना लॉजिक 0। त ही ICs तव्हां वठी सघो था ऐं हूअ वायर वठी छॾिजो जेका कनेक्ट करण लाइ। ही हिन में ही गेट्स छा आहिनि? कहिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे हिन गेट में? 3 इनपुट। हिन में 3 इनपुट्स आहिनि। Okay, now there is an expression you need to implement using logic gates. Here expression. This expression you will implement using logic gates. A, and you use a NOT gate. This is input A, output is A complement. This is input B, output is B complement. B complement. This is A and this is B complement. This one is AA and this one is B complement. A and B complement. This is A complement here and this is B. So output of this is A complement and B. Output of this is A and B complement. And finally you put OR gate. This comes here, this comes here. So you get this output. This one is OR. This one is OR. So this is OR gate. This is one input and this is the other input. A and B complement comes here. A complement and B comes here. सही है? सब clear थी वियो? Now you know how to implement a logic expression using logic gates. Not and or. 3 types of gates, fundamental gates. हिन वीडियो खे लाइक कंदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। असांजो फेसबुक सुफ़ो पिणु लाइक कंदा ऐं कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।